So welcome back to the Karshan Affairs show. This is season 3, episode 10. This is the last episode of the season. तो यार बताए कहाँ से शुरू करते हैं? वैसे आप यार एक आपसे मैंने पूछना था जो you took the LSAT, the mock LSAT, right? भाई हाँ काफी वक्त गुजर गया उसके बाद मगर बताओ. तो मेरे दोस्त से भी बात हो रही थी. I think she took the LSAT recently. Right. And I don't know if she plans to go to law school or if it's something that she's like thought of. Mm-hmm. But she didn't tell me what she got, but apparently she did really well. Right. और मैं भी कई बार सोचता हूँ यार कि you know I think we're coming back full circle to the original question of Mm-hmm. what would you do if money was no object, right? Like if you just didn't have to work for money and like like how much would it really change your life? And I really do think I would pull Emma Watson, and I would maybe go to law school even, just and even let's say I drop out in a year, Mm-hmm. It's like it doesn't really matter because it's not consequential. Like I'm only doing it because I'm interested in it. Mm-hmm. And I can always come back and pick up where I left off, even if I like abandon it halfway. So I do think it'd be cool to do that, do a JD from like a cool, like a really good law school. Mm-hmm. It's so like analytical and intellectually stimulating that it's kind of like going to the military but for your brain, Nice. यार मगर सवाल है कि अगर if you had no need, right? If you're just interested in the law, would you go to a T14 school? कि जब मैंने कहा I want to go to a community college, right? It's mostly because it has very little expectancies out of you. कि coursework काफी आसान होता है and whatever you do out of your own desire to do it, So आपको क्या लगता है like if you were Emma Watson, like for example went to Brown University, yeah? So it's not like she took an easy way out, but like if you had no reason or like no financial outcome for going to law school, would you want to go to one that really puts you through everything that T14 puts you through in 2 years, or would you rather pull like a Jeff Winger and go to a community college and get a degree, but still study, just as much as you would? Man, I would definitely prefer T14 or the equivalent of that, depending on what field I'm in. Right. Just because I think the opportunity to learn from the top 1% of people in your field, Nice. I think that's such a unique opportunity. Yeah. And it shapes you in a way that's like that's going to leave like a lasting impact on you, So you might do like only like you might be with a professor for 5 months, like only for 5 months, doing a course with them. Yeah. But then the skills that you take away from that are going to be with you forever, because the people that you're learning from at T14s, man, they're like, these are people who've been like senior partners at big law firms. Many of them have worked as like attorneys, like district attorneys or prosecutors, or they've been, on the legal teams of on like litigation teams, So they've really done some like extraordinary work, So I would say it would be like, if you want to go to acting school, right? Like it would be like learning from like Brad Pitt, like getting like one-on-one classes from Brad Pitt, Nice. Truly someone who's like the cream of the crop in his field is like teaching you. And that I think is like really worth it, regardless of what you're doing, to really learn from like the top dogs in your discipline. I agree, but even the last time you said cream of the crop, I was surprised you didn't say creme de la creme. But एक और सवाल है कि जिस तरह से हमने जिंदगी गुजरी ना,
if you could, right, would you go back and let's say primary education is critical. So up until you're 18, you go to school, right? And then instead of going to university, कि हम तो यूनिवर्सिटी जब गए थे हमें पढ़ना ही नहीं था, और जब हम अभी मतलब हमारे काफ़ी ट्रैवल के शौक है, would you switch that up, like instead of not like a gap here, but would you spend your 20s traveling and your 30s going to university? Because like आजकल हमें पढ़ने की काफ़ी दिलचस्पी है, और उस ज़माने में हमें काफ़ी ट्रैवल का दिलचस्पी था, मगर वक्त से और पैसों की कमी से नहीं हुआ है. तो would you switch that up if you could? Honestly, no. I'm like happy with how things turned out. Right. And मुझे लगता है कि इस वक्त भी in terms of how I am and like physically and mentally and just overall. And not any different than where I was 10 years ago. If anything, I'm like better now. So that's one, I think, big factor when it comes to traveling, right? Is like, am I like physically able to travel and like explore and do all the things that I'd like to do on those travels? And on that front, I don't think I'm any different now than I was 10 years ago. Right. So even if, you know, it was delayed a little bit, I think it's fine that I'll be able to do it now. Nice. But at the same time, like I got to travel a fair bit in my 20s even. You did. Which I'm happy, you know, like because for a while, like everything came to a standstill, and you know there was no travel, and but on the whole, like I'm pretty content with how things worked out. Yeah, that's nice. But like यार एक यादाइश की याद आ गया कि याद है हमारे जो एक ओजी गंजी स्वैग डूड था जो हमारे आर्ट टीचर था. अमित सर जी. तो जब मैं so we discussed this off the podcast, but I've been painting for the past 2 weeks. So Seher ने मशवरा दी थी कि do something for your happiness, and the first thing that came to mind was I wanted to paint, because काफ़ी यार जहन पूरे उसमें पड़ जाते हैं. You forget to check your phone, you know, काफ़ी वक्त आसानी से गुजर जाता है. तो I bought all the stuff I needed and I started painting. और मुझे यार गंजीसवा की याद आ गया कि उस ज़माने में जब हम छोटे थे उसने काफ़ी मुझसे कहा था कि यार आपकी काफ़ी क्या कहते हैं कि टैलेंट है, मगर आप गलत जगह पर फोकस कर रहे हैं. कि उसकी मतलब ये था कि हम जब छोटे थे हमारे नज़रें तो खिड़की की बाहर थे कि you know what's going on the ground, कि लोग क्या खेल रहे हैं, और जब थोड़ी और बड़े हुए तो हमारे नज़रें तो खिड़की से लड़की पर आ गई. तो कभी हम आर्ट पर फोकस नहीं की थी. सही. और मेरे जो भी मतलब आज तक मैंने कुछ ऐसे नहीं बनाए जो हमारे घर पर लाइक फ्रिज पर you know जो अच्छे वाले हैं वो आपकी बेटा बेटी की आर्ट वर्क्स तो दिखाता है. तो हमारे आज तक ऐसे कुछ नहीं था, मगर जब मैंने दोबारा शुरू की तो मुझे लगा कि यार गंजीसवा की बातें में कुछ बात था. और जो शेरा तो उसकी फेवरेट स्टूडेंट था. सही. वो काफ़ी मुझसे ज़्यादा वो आर्टिस्टिक है बंदी, कि गाते तस्वीरें बनाते सब करता है. तो शेरा की काफ़ी आर्ट वर्क्स तो हमारे घर में मशहूर है. तो शेरा से गंजीसवाग ने कहा ओ यार तू तो लाइक सिर्फ एक टीचर है हमारे स्कूल में जिसने मुझसे ज़्यादा शेरा की तारीफ़ की. एंड यू नो ग्रोइंग अप इन द शैडो ऑफ समवन स्पेशली लाइक मी इज़ नॉट ईजी. तो मैं मानता हूँ कि हर टीचर तो उसके बताओ हाँ तू तो इसकी बहन है तो ऐसे होंगे. तो द वन प्लेस दैट आई वाज़न्ट रियली गुड वाज आर्ट्स. और हम दोनों ने काफ़ी मतलब कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की उस घंटे में. तो मुझे यार ये भी याद है कि
वाटर कलर्स तो हम लेके जाते थे, और मेरी मसला ये था कि यार ये जो पेंट आर्ट की दिन होते हैं, हमारे जो कलर्स है ये सब लेकर जाने थे। और हमारे ना हमेशा कुछ चीज़ें लाजिम होते थे कि बैग के अलावा हम स्पोर्ट शूज़ तो पहनते जाते थे, और जो हमारे बैट्स है ये लेकर आने थे। तो उसकी अलावा ये कलर्स भी लेके आने मुझे काफ़ी, it was like I'm running away from home, उतने चीज़ें था हाथ में, तो मैं लेकर नहीं आते थे। तो शायद इसलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं की, मगर मुझे याद है कि उस ज़माने में हमारे जो सफ़ेद शर्ट्स होते थे ना, तो हम पीछे ओ बैठते हाँ थे। यार, अभी मुझे याद है वो। जी, हम पीछे बैठते थे, और ये वाटर कलर्स जो थे सिर्फ बंदों के पीछे हम लगवाते थे कि जस्ट स्प्रे कलर्स बिहाइंड पीपल, दे वुड नेवर नो कि हमने की थी। एंड ये हमारे हरकत थे भाई कि 1 घंटे तो मिलते थे हफ्ते में कि आर्ट पर कुछ फोकस करूँ, उसमें हम चुतिया पे कर कर वक्त ज़ाया करते थे। मगर आजकल मुझे लगता है कि गंजी स्वैग की यार बातें में कुछ बात था, गलत था मैं। नहीं यार, ये बात आप यकीन नहीं करोगे वैसे, पर मैं परसों ही अमृतसर के बारे में सोच रहा था। क्यों यार, ये क्या पता नहीं बात है? कहाँ से हाँ पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग जहन में उनका यार जी ख्याल आया था। जी। But I just remembered some obscure memory, man, from like way back in the day. एक दफा मैं उनके साथ वहां भी गया था, एक island हुआ करता था ना, I think it was like the Banana Island or something. No, hold on. Palm Island. Oh yeah, Palm Tree Island. Yeah, Palm Tree Island. Yeah. तो हाँ, एक दफा मैं वहां वहां भी गया था उनके साथ, अच्छा, and it wasn't even from school. ये क्या बात है भाई? क्योंकि यार दरअसल आपकी क्या सीन चल मेरे रहे थे? यार मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे ना, हाँ जो सारे टीचर्स को जानते थे, और वो खुद भी दरअसल एक टीचर रह चुकी हैं। ये कौन है भाई? हाँ तो आपको आदित्य मालूम है, आदित्य चतुर्वेदी? हाँ So he was like a good family friend of mine, right? तो yeah. उसके वालिदैन मेरे वालिदैन काफी उनके लॉबी अच्छे था। ताल्लुकात हैं। जी जी। और उसकी मॉम पहले हमारे स्कूल में टीचर भी रह चुकी हैं। अच्छा, पढ़ाता तो क्या था? मुझे याद नहीं है। वो शायद यार वो छोटे क्लास को पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा, और वो भी कुछ टाइम ही रही थी वहाँ। I don't think she taught there long, अच्छा। तो और उनके वैसे भी सारे टीचर्स के साथ ताल्लुकात थे। तो सारे डीपीएस के जो टीचर्स थे, क्योंकि आपको तो पता है, all North Indians know each other, आपकी तो लॉबी था भाई। हाँ यार, exactly, खासकर डीपीएस में तो सब I think it was only North Indians, it was like the MES of North Indians, yeah, exactly, man. वाकई Yeah. हाँ यार, वैसे यही सीन था, तो they were all like, they all knew each other outside of school as well. Right. तो कई बार वो या गैदरिंग्स पे मिलते थे, और लोगों के घरों पे I would run into teachers. पर सबसे नहीं, कोई टीचर होती थी, खासकर सीमा मैम हमेशा होती थी हमारी, जो लाइब्रेरियन। और उसके अलावा हमारे गंजी साहब सर जो थे वो भी होते थे हमेशा, तो क्या कहते हैं यार, अभी यार मैं भूल ही गया। हाँ, तो वो मुझे एक दिन पता नहीं कहाँ से याद आया, जब हम लोग वो बोट पे बैठ के हम लोग पाम ट्री आइलैंड तक गए थे। तो गंजी स्वैग सर भी थे, सीमा मैम भी थी, और ये सारे लोग थे। बल्कि एक आपके इंग्लिश सर भी होते थे, उनसे भी मैं एक दफा मिला था, दीपेश। हाँ अच्छा, वो था। ये कौन सी नॉर्थ इंडियन वाले माहौल में आ गई भाई? एक दूसरी बार वो आए थे, I think उनको खास बुलाया था, outside the lobby, yeah. You can't sit with us, eh? यार पर नहीं, शुक्र है कि हमारे स्कूल में वैसे ओवरऑल थिंग्स वैसे ठीक थे, पर कोई मुझे पता है यार, I know you told me that एक दो ऐसे टीचर थे who were like, हरामी थे, like biased. जी, ऐसे भी कह सकते हैं।
हाँ नहीं यार, ये तो सही नहीं है यार, मगर यार बल्कि मुझे भी अभी भी लाइक आई एम नॉट अ विक्टिम, तो मुझे भी कहना सही नहीं लगता है, लाइक मुझे सब पता है। नहीं नहीं यार, ये मैं आई डोंट डाउट इट, क्योंकि हमें, आपको याद होगा कि 10वीं में और 12वीं में हमें बताते भी थे कि when you're taking exams for Hindi or English, and you have to write like say a letter, then आप कभी अपना नाम, असली नाम ना लिखें. Always write like ABC or XYZ or something like that. क्योंकि अगर आपका वो कास्ट या आपका मजहब देख के आप वो कई बार आपके it can happen, what if the examiner doesn't like people of this caste or this religion, जी यार, मैं जो हमारे एड्रेस लिखने था ना इंग्लिश में, तो हमेशा मैं वेस्ट पॉइंट विस्कॉन्सिन लिखता था, एंड यू नो व्हाट दैट्स अ रेफरेंस टू, like literally every letter I wrote. Yeah. Is West Point even in Wisconsin? No, it's not. West Point is in New York, the military academy, isn't it? It's in New York. Yeah, I was gonna say, man, like. Yeah. But no, man, because I was gonna say ये दो इतनी अलग जगह, हाँ. It's like saying, I don't know. It's like saying, yeah, I live in in Mumbai, Jharkhand. Yeah. मगर यार रेफरेंस तो थे दैट 70 शो के, मगर मुझे याद नहीं कि ये नाम लिखने वाली जगह पर मैं क्या लिखता था, बट लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, ये सही है, बट आई थिंक आई यूज्ड टू यूज प्रिसाइज नेम्स, तो मुझे ये किसी ने बताया नहीं, मगर यार गंजी स्वैग ने क्या कहा था? नहीं, गंजी स्वैग का मैं यार, I just remembered him from that trip. पता नहीं पर्सनल मेरे पता नहीं जहन में ये बात आई थी. Sometimes you just get like flashbacks, right? जी. तो मुझे ऐसे याद आया था कि हाँ यार, एक ना maybe it was something related to my own students, them doing artwork, or हाँ यार, I think that was it, because I have a student who is like really good at art. Right. Like she's honestly brilliant, and she's completely self-taught, like she's never taken any formal classes or anything. Right. But कई दफा ऐसा होता है कि हम फारिग होते हैं क्लास में, तो she'll like draw something on the board with like a marker. Dicks, right? Nah, dude, that would be really funny, man. Yeah. But yeah, she'll just draw something with like a marker, and it turns out like phenomenal. Nice. और मैं उस वक्त फिर सोचने लगा था कि हमारा आर्ट का क्या सीन था, and that's when I remembered Amit sir, and I'm like, हाँ यार, ये भी एक सज्जन हुआ करते थे, यार हमारे काफी नाजुक हाल था कि nobody cared if you're good at art. मगर यार ये गंजी स्वाग की मेरे सिर्फ एक यादाइश है कि उसकी एक मोनोलॉग था, तो ये आजकल भी मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में हम शायद 5वीं में थे, तो उसने कहा था यार मेरे पैसे मैं सब चीज़ों पर इस्तेमाल नहीं करते, एंड लाइक ही वाज अ वेरी लाइक वन ऑफ दोज टीचर्स दैट गिव्स यू विजडम. तो उसने कहा था कि जब मैं लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जीन्स पुरानी है कि नहीं, राइट? ही सेड the one thing that I know is if I want to paint and I don't have my equipment with me, I get really angry, right? So he told us back in the day, the one thing that you need to have is your equipment, right? कि जो भी आपकी दिलचस्पी है, कभी ऐसे माहौल नहीं बनो कि आपको कोई चाहत है और वो आप कर नहीं सकते. और ये यार मैं आज तक मानता हूँ कि whenever I get into something like MMA, for example, I have like 10-15 pairs of gloves and like shin guards and all that, कि मुझे हमेशा लगता था कि it's not like even cricket, for example, it's not like the kit makes the man, you can have the best bat but you can be an idiot. मगर मैं यार मेरी जो हर चीज़ है मैं सब रखता था कि जब मूड आ गया ना तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं. ये भी हमारे वैसे खुदा की नेमत है कि हम ये सब कर सकते थे, मगर ये मैं अभी भी मानता हूँ कि इफ़ यू हैव समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, देन यू नीड टू मेक श्योर यू नो इन्वेस्ट इन इट, कि जो आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप आपकी दिलचस्पी पूरे कर सकता हो उसमें, कि इंसाफ़ी से कर सकता हो वो.
वाकई यार ये तो बहुत जरूरी है और आज की तारीख में कोई एक्सक्यूज भी नहीं है to not go balls out, you know, to not go like balls deep into whatever you're doing. Because sorry, I said balls out, you know. No, I meant to say balls deep, you know. I got the proverb wrong. हाँ ये तो बड़ी जी it's very historic yeah. I would lose points on an essay, you know, if I wrote. Yeah, as long as you don't write your name. Thy must go balls deep into whatever thy chooses. Aristotle, yeah. But हाँ यार ये बड़ा जरूरी है, you know, to really go like full into whatever you decide to go into. जी हमारे लिए आसान है, हम तो ADHD वाले बंदे हैं. I feel like यार हम काफी autistic भी हैं. हाँ ये तो है यार, पर ये you know it is possible, you know, because it is more common than you think. Yeah. और काफी दुनिया के जो you know even like you know Elon Musk. Yeah. But dude, like वो नजर आते ही समझ आते हैं कि बंदे में कुछ कमी है, क्रोमोसोम की कमी है. Yeah, उसका एक जो उसका किस्सा था मैं समझ गया था. Okay, he must be autistic because he like वैसे उसका इतना नहीं पता चलता, you know, like from like how he talks or from how he carries himself. I remember there was one incident, I think उसकी high school की कहानी थी where it's really dark, man. I think uska koi it's like there was a kid in his school who lost a member of his family to suicide. Right. Like it was a really big like really tragic. And then Elon, man, I think the same day like he was like making jokes about it to his face. And then the guy like pushed him down the stairs, you know, like I think he broke a bone or two, and that's when I was like, "Hi, ye shayad banda, you know, like, something might not be right with him, you know." यार मैं मानता हूँ मगर हम भी I was just about to say हम भी ऐसे बंदे हैं मगर I'm making the case for ourselves here. वाकई. Dude, I just walked into that one. But yeah, Elon का मसला क्या है ना कि and this is why I feel like bad for him almost because वो एक edge lord वाला phase होता है, you know, बहुत से लॉर्डों का, and then most guys like come out of that, you know, they're like, "Oh, that was like pretty cringe." वो बंदा 40-50 साल का है and he's still in his edge lord phase, you know. जी वाकई में मुझे भी वही लगता है कि he's that dickhead we used to be. हाँ यार जो 4chan का, you know. हाँ भाई exactly ये /b/ की बंदा है. And the guy has $400 billion, man. You know, it's just so crazy. जी. Yeah. But नहीं यार ये I think उतना पैसा होने के बाद it becomes more of like I think it's no longer about the money, you know, like you want to be able to make a statement and just like be someone who's like that people are talking about, you know. हाँ यार मगर मुझे लगता है कि ये बंदा जो भी कर रहा है like there's a lot of Tesla fanboys who I hate, right? Like same. Yeah. और यार उसमें ऋषभ भी एक है और ऋषभ उसके लिए काम भी करता है तो जी ये मुझे मालूम नहीं था यार. हाँ जी ये यार मसला ये है कि हर बंदा मेरी लिंक्डइन में है तो मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है मगर यार बात यह है कि जो उसकी ever since he tried to like the hostile takeover of Twitter and you know renaming it X and all that I think he's gone downhill कि ये हर चीज़ हर बंदा कर नहीं सकते भाई कि by the way the founder of Twitter Jack Dorsey he's somebody who I like, you know, like काफी level-headed बंदा है और he knows what he's doing, but Elon is too loud, you know, मुझे ऐसे ही लगता है. हाँ bro, Elon का थोड़ा scene off है, you know, and I think you're right.
the stuff he did with X, that's him like really reaching out of his like, you know, his area of expertise, and like and every move he's made with X so far has been like a giant failure. And I don't know, man. I think the guy is just too like he's driven by his insecurities, you know, like he just likes being in the spotlight, having attention. He likes that he has fanboys, you know, and that's driven him to make some pretty bad decisions. It has, but like also at his level, especially if you look at his history with PayPal and where he comes from, और उसकी तारीख अगर देखा जाए तो it's like there are people who are richer than him, right? And there's people who have done more than him, and there's people who don't crave the kind of attention he craves. He's still very much like a 16-year-old girl, you know, the kind of fights he's like like the kind of fights he's getting into, there's no need for him to do that. Like मुझे एक मिसाल याद है कि एक बंदी ने एक ज़माने में ट्विटर पर अभिषेक बच्चन को एक घटिया एक्टर बुलवाए थे, सही? Now she didn't actually tag him, right? Now उसने हैशटैग लगवा दी, मगर अभिषेक साहब ने ये ढूंढ कर उसको रिप्लाई दे दी कि मैडम ऐसे नहीं है. तो उसकी रिप्लाई आ गई बंदी की, यार अभिषेक तू इतने वेले तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है भाई कि कुछ अपने वक्त से कुछ अच्छे कर लो, कि इन सब से गौर करने से कुछ नहीं मिलता है. But say, yeah, you know, you can't spend your time like engaging with everyone and anyone, you know. हाँ यार. मिलते क्या? ये तो है यार, सही गल है ये तो, you know. And जी. What was that? Oh, apologies, that's my phone being weird. All good. But और सुनाए bro, आपका क्या इरादा है, you know, what's on the agenda? पता नहीं भाई कि ज़िंदगी काफ़ी बदल रहा है कि मुझे भी like I just want to put this on the record कि हम मिले नहीं काफ़ी देर से, तो one of the changes I've tried to make is, you know, trying to put effort into being happy, कि गमज़दा रहने से ज़्यादातर मिलते नहीं काफ़ी कुछ ज़िंदगी से, और हमेशा यार किसी भी दौरान में आपको गम मिलते ही, यूँ कुछ करने नहीं पड़ता. तो आजकल खुशियाँ की तलाश में हूँ, और वैसे शहर से मेरी कल आखिरी मुलाकात है, तो हमारे सेशन सब ख़त्म हो रहे हैं. और यार वाकई में मुझे I've been putting off thinking about it for a while कि इतना अच्छे यार तो बने वो कि अलविदा कहने में यार दिल टूट जाता है कि पता नहीं, मगर काफ़ी अच्छी बंदी है यार. और ज़िंदगी में ख़ासकर कभी कभार ऐसे लोग मिलते हैं जो छोटे वक्त में काफ़ी असर करते हैं यार. और उसके अलावा तो पता नहीं, भाभी के साथ भी खुदा की शुक्र अदा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे मेरे और उसके वक्त चल रहा है. और पता नहीं भाई कि मैंने जो ये बुरे बातें थे जो जहन में पड़ा था सब छोड़ दी कि you know जैसे है वो वैसे है, कि I can't. मैं हमेशा खड़ा होता था कि you know मैं खुद किस्मत से लड़ूंगा, मगर आजकल ये भी लगता है कि मैं कल्ला सब कर नहीं सकते, तो छोड़ दी ये सब लड़ाई. जो भी होता है एंड क्या कहते हैं कि I've come to terms with my destiny. तो यार वैसे ही है. नहीं, ये बेहतरीन है यार, and that outlook is like the one that I've always aspired to have, where just accepting things the way they are, especially things that are not within your control, just letting them be, and you know, working around it. It's like definitely a recipe for fulfillment and just greater sense of like well-being as well. You're just you know less
less worried and less stressed when you let go of things that you can't control. हाँ यार और ये मेरे हम ख्याल से है दोबारा फाइट क्लब में आ गए यार कि हाँ और ये इसमें ये बात आपने भी एक दफा की थी about stoicism. Yeah, man, I keep saying it in French because I heard about it from a French podcast. जी. It's like stoicism. Oh यार. I don't even know how to say it in English. No, stoicism. मगर यार अगर आपके पास अच्छे फ्रेंच पॉडकास्ट है तो भेज लेना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ. Bro, एक है जो बेहतरीन है. जी. And I think the way it's designed is really clever. अच्छा. So it's called Inner French. You should definitely check it out. It's on Spotify. Right. It's amazing. It gives you a great look into French culture as well. From the balcony, you could see like the entire city, like a skyline from your balcony, you know? Nice. So like sunrises and sunsets from like the 40th floor balcony, while smoking and like, you know, just like doing every drug under the sun. Nice. And just admiring like the view, you know, from there and learning French the whole time. You know, I would have headphones, like, so I would go out for smokes and like and like listen to stuff while I'm doing, you know, chores around the house. That's the podcast that I started with. Yeah. And yeah, man, I love learning, and you know, I love like incorporating into my like daily routine. Gee. So I would just be doing the things that I would normally do, but then I had my headphones in, right? So and like I don't have them anymore, but they were like these noise canceling headphones where it's perfect for learning a language where the sound quality is amazing. You can hear the words like very clearly, you know, and it's ideal for like listening comprehension and like actually like hearing the words like they're spoken, you know. Yeah. And yeah, man, Inner French is really good. That would be my top recommendation. मगर यार खूबसूरत ज़माने थे आपके. वैसे थे यार, but you know, उस ज़माने में मैं इस ज़माने की ख्वाब देख रहा था, because you know, a lot of that preparation that I was doing was to come here eventually. मतलब 2019 में मैंने मतलब फैसला ले लिया था कि eventually I'm gonna move here. Would you say you're self-taught in French? Yeah, I'd say so. Nice. 'Cause yeah, man, even like because I never took a formal course. But then the thing is, and my friends noticed this as well, like I already had a lot of the basics. Right. Because of like the little that we learned in school. But it was like the very basics, like things you could learn in like a month. In a PDF, from PDF, yeah. Yeah, from PDF, yeah, like the numbers, the colors, like the saying how are you, hi, stuff like that, you know. But I did have a lot of that vocabulary, but it was still like almost zero, you know. I was starting from almost zero. Right. But yeah, this is partly how I did it, but it helped that I was surrounded by native speakers at the time. Like most of my friends at the time were from France. I think I noticed an improvement in my Urdu as well after moving to Australia. Nice. And my parents must have been so confused. They must have been like, how did you come back from Australia and now you're like speaking French? क्या सीखने भेजा था तुम्हें सही? मतलब आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है बंदा and you're learning French and Urdu, you know? समझ सकता हूँ. But yeah, dude, I mean, I'm glad I did it though, because it opened up a lot of doors, and you know, the only reason I have my current job is because of like because I speak French. Yeah. And it's also just a good language to know for travel as well, you know, like the places that I want. It's a global language, yeah. Yeah, for sure, man, and especially the places that I want to go to. Like most of them are like French-speaking places, you know. Yeah.
most notably France. Like they speak French there. Yeah, I've had that. Yeah. and Belgium and Switzerland as well. So really just there's France proper and then like jo nakli wala France. सस्ता. Yeah, वैसे Switzerland सस्ता तो नहीं है पर Okay. सही. But it's not the real deal, you know. जी. मगर यार हम कहाँ थे? कैसे पहुँचे यहाँ? हाँ ये the podcast. How we get there? Like, yeah, how do we get there actually? Elon पर था. Elon. हाँ यार हालात. सही शहर ये सब. हाँ शहर हाँ वही हालात है. पर नहीं यार ये बड़ा अफसोसनाक है कि जी आपके और शहर के सेशन खत्म हो रहे हैं क्योंकि I've heard a lot about her from you. And it's been a while since I heard something positive from you about a person you've met recently, you know. जी काफी कम है भाई. ऐसा कम होता है और मेरे साथ भी कम होता है, you know. You probably haven't heard like much positivity from me either. सही क्योंकि पुराने तो हमारे जो OG दोस्त हैं और OG यार हैं उनकी बात तो अलग थी, you know. They were like आजकल सिर्फ छूटियों से मिल रहा है, you know. जी बिल्कुल यार आजकल तो छुट्टियों की तादाद भी बहुत है. हमें हमारा you know unfortunately उनसे राब्ता भी बहुत रहा है. So when I heard like that you had nothing but good things to say about Seher, I knew that she would be something special. जी. तो वही मैंने पूछना था यार कि आप you know why don't you come back, you know, like if it's like helped you especially and if these are goals that you want to continue working on, even like once or twice a week, you know. हाँ यार कि उसकी ये मैंने भी सोचा था मगर जब हमने शुरू की थी ना उसने ये कहा भी था कि यार ऐसे है कि I'm here to give you the tools और उसकी बाद जो भी करने हैं आपको खुद करनी है. सही. तो even in her mind she told me यार एक ज़माने के बाद आपको मेरी ज़रूरत पड़ेंगे नहीं and this is my goal and ये ऐसा ही होना है. तो यार हमारे अलविदा कहने तो हमारे हिजर तो बेशक होना था. And the thing is, in the last few weeks and things like that, it's been, I can see it building up to that कि उसने सब कुछ सिखा दी मुझे और जो भी मुझे सुनना था उसने कह दी. तो बात यह है कि यार हमारे ताल्लुक़ रखने में अभी वो ज़रूरत नहीं है. हम अब भी like दोस्त बन सकता हो कि हम ताल्लुक़ रख सकता हो मगर एक थेरेपिस्ट की और उसकी क्लाइंट की एक ज़माने के बाद you know एक ताल्लुक़ ऐसे ही नहीं होते. सिर्फ फॉलोअप्स और चेक इन्स होते हैं और वो भी वो कर सकते हैं मगर वो फिर भी वो सेशंस तो ज़रूर नहीं है कि अगर मैं शेड्यूल करूँ ना तो वो मानेंगे भी नहीं कि वो बताएंगे कि यार आपकी अभी कोई ज़रूरत ना रहे. अगर खुदा ना खास्ता ऐसे ज़माने आ गए कि दोबारा आपको वही एहसास मिल गए तो आ जाओ. तो ये हालात है और मैं मानता भी हूँ like I knew that this had to end at some point. मगर यार एक और बात कहूँ आपसे कि वो तो खुलेआम मुझसे बात करता है. सही. तो उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो भी हमारी उम्र की है तो जब रिश्ते की शादी की बातें आते हैं वो ख़ुद की मिसाल देता है. तो उसने मुझसे कहा कि यार मेरे हर रिश्तेदार मेरे पीछे है कि कब शादी करेंगे आप सहर. तो उसने मुझे कहा कि मैं तो खुलेआम बताना शुरू की कि मेरे एक बंदा है कि मेरे बॉयफ्रेंड है. तो वो मुझसे कहा कि वो पंजाबी है वैसे तो वैसे मैं भी पंजाबी हूँ. तो उसने मुझसे कहा कि यार वो ना बंदा तो बड़ी अच्छा है मगर वो पठान है. तो मैंने पूछा क्या. तो उसने कहा हाँ यार बड़ी मतलब दिल की साफ़ है मगर शक्ल की काफ़ी बदसूरत है. तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं कहते मगर काफ़ी यार अच्छी बंदी है. जी you know, हाँ I would जी have a hard time as a therapist. हाँ I would want to like a person, you know? जी और यार वो लगता है वो भी हम वही बुक पढ़ी है जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कि हमारे
पूरे सेशंस में वो मेरे नाम इतने बार इस्तेमाल करता है कि मेरी अम्मी ने इतने मुझे बुलाए नहीं होंगे. Every sentence like, do you know what, Fahad? And that's exactly how it starts. Like she uses my name so much कि मुझे ही लगता है यार मुझे पता है कि मैं कौन हूँ. No, that's a good thing, you know. That means that you guys are like too close enough to give you the real talk, you know. हाँ यार वो मतलब बेशक जो कहना है ना वो कहता है कि she told me once कि यार ज़्यादा desperate ना बनो, बंदियों के अच्छे नहीं लगता है. तो मैंने अच्छा, and like she helped me realize कि मैं कौन हूँ, you know. कि अगर आपको याद है कि जब मैंने ये मतलब क्या कहते हैं जर्नी को क्या कहते हैं यार, अल्फाज तो आ नहीं रहा. जब ये वही क्या कहते हैं यार, दिस इज बॉदरिंग मी नाउ. हाँ, जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो मैं अपने आप को काफ़ी भूल गया था. यू नो मी, you've known me for years. मेरी काफ़ी ईगोटिस्टिकल बंदा हूँ, काफ़ी विराट कोहली वाला माइंडसेट है. तो मुझसे ये सब छूट गया था. तो she helped me realize that a lot, and she helped me realize who I am by calling me out, you know. At the points when she had to say, you're being a faggot, she really did say you are being a faggot. तो मानना पड़ा कि सही है बंदी की बात. Like she told me don't be clingy, don't be desperate. बंदी को भी अच्छे नहीं लगता है. So she's like, believe in yourself. वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, कोई मसला नहीं. तो she's very helpful in that fact. She does, she calls it like it is. Yeah, definitely, man. That's something you want to have in a therapist, like for them to be straight up with you. Yeah. Anyone who's treating you, basically, you want them to be very direct with you, not beat around the bush, Yeah. Like just tell it as it is. Gee. But but I like her philosophy as well, where she thinks of herself as playing a limited role, where she's there to give you the tools, but then beyond that, you gotta take it in your own hands. I think that's like what any good coach or any good like teacher even that's how they see their role. Exactly. And it's a good thing कि मैं सिर्फ it's hard to say goodbye, वो सिर्फ उतना है. But उसके अलावा यार उसने, like she's one of the canon people in my life, कि if you take her away, it doesn't make sense. I can tell that just from like what you told me about her, आज बहुत खतरनाक मौसम है यार. I went for coffee in the morning. There's this Italian cafe. और बहुत next level है, it's like I'm surprised. It's like it's pretty cheap, like for how good it is. Right. But yeah, man, I don't know what kind of beans they use, but it's so good. It's a 25-minute walk though, so आने जाने में मतलब 50 मिनट 1 घंटा तकरीबन लग जाता है, But I went there this morning, like, cause I woke up early. मैंने कहा सुबह, एक सवेरे जोटे के साथ एक, we'll get like a fresh cup of coffee. जी. But मैं सोचता था एक दोबारा चक्कर लगाऊं, but अभी it's so fucking cold, dude. हाँ यार, like, I don't know, I would say go for it, but like don't put yourself at risk for that. But यार ये तो जैसे सहर ने कहा ना, that morning coffee is happiness. If you look back at your day कि क्या की है अपने आप के लिए, that you did for yourself, so yeah, it should be commended. अच्छी बात है. Yeah, man, and I think she's spot on with that. That's like I wouldn't have been able to tell you that as a therapist, like because I'm not, and I don't have that like expertise or training. But based on like my own experience, like when I do something a little bit different, some days, I find that it's just that day is that much more memorable, and it's like I feel much better that day, just out of having
experience something different, having tried something new. जी जी. वैसे यार रमज़ान कैसे गुजर रहा है आपके? यार जैसा आपको दिख रहा है यार, you know, it's like हाँ सुन सकता है. जी जी. shit, dude. Yeah. मेरे आपके सवाल का शायद आपको जवाब मिल गए. वैसे मुझे पता था. मगर यार मुझे लगता है कि जब भी मतलब जो 11 महीने हैं ना, मैं उनमें से 11 मैं डरता हूँ रमज़ान के आने में कि जो हमारे आदतें हैं वो छूट जाता है. सही, लाइक योर स्लीप शेड्यूल चेंजेस, यू कांट ड्रिंक टी, यू कांट हैव एनी दैट. तो मगर यार हमेशा जब रमज़ान आ जाता है मुझे यू फील एक सुकून आ जाता है एंड यू फील लाइक योर क्लेंस्ड. कि मेरे यार स्लीप इतने बुरे हैं कि आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम. कि मैं 3:30 पर उठता हूँ और उसके बाद जब तक मतलब इफ्तारी की थोड़ी देर पहले मैं तो सो जाता हूँ, और उसकी बाद तो इफ्तारी है, नमाज़ पढ़ने जाना है, और रात काफ़ी गुजरता हो तो यार मिलते ही नहीं नींद, मगर एक सुकून आ जाता है भाई. एंड आई डोंट नो वेयर दैट्स फ्रॉम. मगर आजकल बुरे आदतें भी नहीं है हमारे, तो इफ्तारी करने में सिर्फ खाने खाते हैं. तो यार पता नहीं कि मुझे आई फील लाइक दिस वाज मच नीडेड फॉर मी. एंड अलहदा कुछ लग रहा है. बट आई वांटेड टू से कि मैं काफ़ी, एक तो बात यह है कि शेरा तो ऑस्ट्रेलिया में रोज़े रख रहा है, एंड यू नो दे हैव लाइक नॉर्मल वर्किंग आवर्स, सो दैट्स नॉट इजी. और आपकी भाभी तो लंदन में रोज़े रख रहा है, एंड शी ऑल्सो हैज़ यू नो normal working hours, and वो तो कल्ला भी है, तो she has to cook for herself and all that. तो यार मैं काफ़ी मानता हूँ especially these two women in my life, कि यार especially जो आपकी भाभी है. यार मैं एक बात आपको बताऊँ कि सिर्फ आपको बता रहा है, आई होप नो वन हियर्स दिस, मगर जिस तरीके की लड़कियाँ आजकल हैं ना, कि उन्हें पता है कि कैसे अटेंशन सीखना है और ये सब मिलना है, और यार नेक शरीफ इंसान वरना लड़की तो मिलते ही नहीं. सही, like you won't even meet a girl who's not ever worn like a revealing top, for example, right? और चाहे जो भी हो कि बदसूरत हो, फिर भी आपको ऐसे ही लड़की मिलेंगे. And then you think about this one person who इतने ईमान की बंदी है कि इतने साफ शरीफ रखा है अपने आप को, कि मुझे लगता है कि यार खुदा तो बड़ी ख़ास है भाई. कि you know मुझे ऐसे इंसान को मिलने से या हमारे ताल्लुक़ होने से, हमारे राब्ते होने से काफ़ी खुशी महसूस होता है कि आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट समबडी लाइक दिस with such high standards, who holds themselves to such like आप सोचो कि आप तन्हा है, कल्ला है, सही, in a country that रिश्तेदार नहीं है या घर की कोई नहीं है, and you still fast and you still keep your ईमान. यार वही होता है ईमान, जब you know who you are when nobody's looking, that's who you are. और जो बंदी वो करता है ना, मैं बड़ी उसको मानता हूँ. आई होप शी डजंट हियर दिस, मगर यार मैं आपको इतना इज्जत देता हूँ कि मुझे पता ही नहीं. आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ हर यार. Man, that's honestly amazing, you know. Is that why you're going to London, like, to meet her? हाँ यार, मुझे थोड़ी मुल्क देखना है. नहीं, मैं भी कहने वाला था यार कि आपको तो लंदन का कब से शौक हो गया है? जब से आपकी भाभी गई वहाँ. नहीं, सही है, बेहतरीन है जी. लंदन. वैसे काफ़ी खूबसूरत शहर है. मैं सोच रहा हूँ कि one of the things I like to do when I travel is I like to कि दोहा में आपको जानते हैं कि हम यहाँ करीब चाय लेने की भी गाड़ी लेकर जाते हैं.
So one of the things I'm looking forward to is just taking long walks, you know. The place that I'm staying at is in Covent Garden, so it's like central London, yeah. So वहाँ से like you can go to both sides. कि Knightsbridge भी करीब है, you know, Harrods and like Mayfair and like the high end places, they're close, and then like East London is also close, you know, कि जहाँ street art ज़्यादा होता है, Shoreditch, those kind of places, they're also close by. So I'm thinking, you know, I'll just wake up in the morning and go for a walk, you know, कि सिर्फ जगह explore करे. And I have a lot of friends there who I haven't told I'm going. I don't want to meet anybody except for one person. तो मेरा ये plan है भाई, सिर्फ I just want to walk, you know. Oh man, that sounds like a plan and a half. And London's like the perfect city to go on long walks. Yeah. And it's what you described. I think is it's a great description of the city. You know, like each part has its kind of own charm. Yeah. And like something unique that sets it apart. Mm-hmm. And that's what makes it so fun to explore a city like that. You know, you see kind of like each neighborhood specialty and explore kind of its like the things that make it unique, you know, and it's very pedestrian friendly, which I love, you know, like you can just go walk to like any part of the city, like it's accessible on foot. And I don't want to do any of the touristy stuff either. Like I don't want to go to Madame Tussauds. I don't want to go on the London Eye. I want to I want to go walk in St. James's Park, you know. I want to basically go to Hyde Park and like look at architecture, Victorian architecture especially. Like मैं सिर्फ सड़क पे खड़े होकर गौर करना चाहता हूँ यार कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहले जिस तरह हमारे घर बनाते थे ये सब देखने चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं यार. वैसे मकसद मेरे वो नहीं है, लाइक दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं सिर्फ तो फारिग होंगे तो ये प्लान है. नहीं ये तो बेहतरीन सीन है यार, ये तो बनाए बेशक, you know, it should be a good time. And have you been there before? Not to London. मेरे 5 साल पहले मेरे वालिदे गए थे and they asked me if I wanted to go, but I didn't. कि मैं उस वक्त काफ़ी सहरा में you know अपने वक्त गुजरता था. तो वालिदा कल मुझे बता रहे थे कि यार वहाँ जाओ यहाँ जाओ, और everything she said just sounded like something I didn't want to do. तो मैं गए नहीं थे, मगर उसकी यार मेरे वालिदे की 25th एनिवर्सरी वो वहाँ गुजरे थे. तो उसने काफ़ी मशवरे दी जो मैंने सुना ही नहीं. तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ भाई. मैं किसी को बताया भी नहीं कि आप जानते हैं, मेरी हमसफ़र जानता है, शेरा और वालिदा, और बाकी सबसे मैंने कहा ही नहीं. नहीं कमाल होगा यार वैसे, क्योंकि देखने वाला शहर है, और you know खासकर जहाँ आप रह रहे हो वो भी मतलब it's so historic जी, और उसकी एक तारीख है, और like London cabs are so iconic and so like central to the city's history. इस तरह की अगर आपको चीजें देखने को मिलें तो it's very memorable, you know. You have to like even though I've stopped taking pictures, I feel like you should take some pictures, you know, so like have something to look back on, you know, like it is a very iconic global city. जी वाकई में. और खुदा करे कि you know अच्छे तरीके से गुजरे, मगर पता नहीं यार, मुझे भी पता नहीं. मुझे सिर्फ ईद को मैं फारिग था तो मैं सोचा कहीं ना कहीं जाऊँ, तो ऐसे प्लान बनाए. नहीं फिट है यार, ये तो मंदी शंदी का भी बनाते हैं सीन यार. आपने बुलाया नहीं इस बार, you know. आपको बुलाने की क्या जरूरत यार, आप कौन सी मेहमान हो, आ जाओ, आप तो भाई है. हाँ मनसफ का सीन तो बनाना था, you know, पर देखते हैं यार. इफ्तारी मैं बहुत टाइम से कहीं गया नहीं. यहाँ तो मैं
खास किसी को जानता नहीं जो ये समझे क्या अफ्तारी होगी मेरे there is a colleague of mine Right. who invited me to Mandi. Nice. तो पर वो दोहा वाली बात नहीं होती है ना दोहा में जो यार याद है पिछले साल हमने कितने अफ्तारी की वही की काफी खूबसूरत है हाँ ब्रो हम लोग वहाँ एक वो इलाका था खासकर यार उसकी मैंने अभी भी एक तस्वीर ली थी और it's just simple things like this it's an example of what I was talking about where you have something to look back on. It's such a simple picture. It was around sunset when I took a photo of like the sky and like the mosque in the back. Nice. And it was that one spot where you broke your fast with like you hit the vape and then you had the wrap, you know, the kya naam hai yaar uska the it's like the parota with the omelet. Oh bhai shai warkak yeah जो जिम के सामने थे वही वहाँ यार हम आपको याद होगा कि आपने you know you took a few hits a few drags and then you were eating there to break your fast जी चाय भी काफी खूबसूरत था वहाँ के हाँ bro वैसे वो I balled on like saffron karak you know yeah dude we had two didn't we हाँ शायद हाँ यार हमने क्योंकि बहुत सही सीन था you know और हम लोग जहाँ भी जा रहे थे मैं वही पी रहा था only like saffron karak you know जी but नहीं यार बड़ा fit scene था but that picture you know even though you're not in it I'm not in it I remember exactly when I took it and like what we were doing and like that memory just comes to mind when I see the picture you know even though neither of us are in it and like there's nothing on it that would suggest like when it was taken but वो सारी यादें जो जुड़ी हैं उसके साथ वो एकदम से याद आ जाती हैं हाँ यार काफ़ी खूबसूरत माहौल बने थे पिछले साल यार काफ़ी हम साथ था तो अच्छे गुजरे थे रमज़ान हाँ मैं भी ये सोच रहा था यार पिछले साल अप्रैल में हुआ था रमज़ान तो मैं उसी टाइम आया था दोहा जी you know I was there landed first week of April और पता नहीं यार it felt so good to be there you know दोहा की हवा you know जो लगी थी जब it felt like being back after you know just so long because it had been and पता नहीं यार it felt right you know it felt like being home and खासकर दोहा में चलने फिरने में मुझे ये ऐसा महसूस होता था you know कि I'm walking around my city जी ओ यार वाकई खूबसूरत क्या एहसास है हाँ बिल्कुल ऐसा एहसास था यार कि हर you know me man I like to walk around like wherever I go जहाँ भी मौका मिले और अभी तो दोहा में भी it's like very easy to do it like there's sidewalks everywhere you know जब भी होते थे तब भी हम चले जाते थे you know walk पे but this time man I would go on like these late night walks like आपको तो याद है कि मैं एक तो फारिग था ऊपर से मेरा my sleep schedule was all backwards you know हाँ जी तो मैं रात जागता था you know and I would like go places like just go for long walks around the city और बड़ा मजा आया था you know like going to all these like corners of the city where like I used to spend time you know मुंतज़ा में जिस फ्लैट पे मैं रहता था वो अभी का अभी बिल्कुल वैसे का वैसा है एकदम जी सही हाँ ये बड़ा सही सीन लगा था you know like मंसूरा मुंतज़ा नजमा इन इलाकों में मेरा ये पूरी लाइफ गुजरी है you know and उसके अलावा it felt good to see the new places as well like Lucille was like a shock you know like I was like this is like a whole city that wasn't here when I was here you know जी वाकई मगर यार एपिसोड तो ख़त्म होने वाला है आपको क्या लगता है इसको नाम दो
क्या रखें यार इसका, कहाँ से कहाँ है यार वैसे हम लोग, कहाँ से कहाँ ही रख दे। हाँ ये सही है यार। यार हम तो कुछ भी कंटेंट बन सकते हैं भाई, हम यार मतलब काफी अलग इंसान है, कुछ भी। ब्रो वाकई, लेकिन यार आपने जो एनालिटिक्स का बताया ना, मुझे हाँ वाकई जी। देखना है कि व्यूअर्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन लोग देख रहे हैं, हाँ अगर यार। आप शेयर कर तो बेशक करें यार। हाँ जी बेशक, मैं क्या मसला है, जरूर भेजेंगे आपको। ब्रो और यार टाइटल में आप नाम मेरा के एस कर सकते हो क्या कर सकते हो? क्या? कैन यू चेंज इट टू के एस? के के एस? या एस क्या है भाई? यार कर्श के लिए इट्स लाइक शॉर्ट फॉर कर्श, के एस। के एस बेशक भाई, द के एस एन एफ एस शो। हाँ ये सही रहेगा। कोई मसला नहीं यार, मैं अगले अगले ने कल में तो अपडेट करेंगे द के एस एन एफ एस शो, कोई मसला नहीं यार। वैसे सही सीन यार। ऐसे नहीं मानो, हाँ आपके ही शो है तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो चूतिया पे रखने चाहिए तो मैं फिर भी रखता भाई, कोई इजाज़त लेने की मामला नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, मगर लेकिन बड़ा आई फाउंड इट जस्ट फैसिनेटिंग कि इतने लोगों ने मतलब कोई कोई एपिसोड सुने हैं, एंड हाँ सिर्फ आई कोई आई कोई, वंडर लाइक वी हैव नो व्यूअर अटेंशन, यू नो कि एक बार सुनते जाते हैं जैसे लड़कियां हमारी जिंदगी में आते हैं। पर यार 24,000 मतलब बहुत लोग हैं यार, सोचा जाए तो ना। मगर यार इतने लोग सब कुछ देखते हैं कि मुझे ये भी मैं मानता नहीं कि इतने बेवकूफ़ों की मिलियंस में व्यूज आते हैं भाई, तो छोटी बात है। ये तो है यार, मतलब लेकिन YouTube पे तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं कहीं रैंडम वीडियो रेकमेंड हो गई, आपने क्लिक कर लिया हाँ और यार, इतने व्यू मगर आ गए। स्पॉटिफाई में ऑटो प्ले और रिकमेंडेशंस भी काफ़ी चलता है। अच्छा हाँ ये भी है यार, सही बात है जी आपकी। जी। हाँ ऑटो प्ले में होता है ऐसा, गलती से लग गए होंगे किसी के। शायद शायद। मगर यार ख़त्म कर दे कि कहाँ से कहाँ ना। हाँ सही सही यार। तो यारो ये हमारे सीज़न 3 की आखिर एपिसोड थे, हम देखेंगे आपको सीज़न 4 में। दिस इज़ बिन सीज़न 3 एपिसोड 10 कहाँ से कहाँ विद KSNFS। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।